will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to give his remarks to the media. Your Excellency, प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय है। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, 2 प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध
और सदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है। हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके। भारत और ग्रीस वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज शाम आप रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आपकी भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to give his remarks to the media. Dear Prime Minister Modi, ladies and gentlemen, it is indeed with great pleasure that I am here in India for the first time in my official capacity as Prime Minister. I would like to point out that it has been 16 years since a Greek Prime Minister has visited a great country. And in Greece last August, I had the distinct privilege of receiving Prime Minister Modi, who kindly extended an invitation for my official visit to India, and I have been eagerly looking forward to this trip ever since. And together with Prime Minister Modi, we continue building on the positive momentum in our bilateral relationship. The joint declaration that we signed in Athens a few months ago, and which upgraded our relationship to a strategic level, is already being put into practice. And as the Prime Minister said, we are making significant progress towards deepening the strategic cooperation in all spheres, in security and defense, investment and trade, science and technology, cyberspace, education, culture, tourism, agriculture. Greece and India are close to one another in many respects. Our shared values serve as a bridge that brings us closer. Both share, I would say, a certain ethos or dharma, as you call it. We both share, as the Prime Minister said, a strong commitment to international law, and especially the United Nations Convention on the Law of the Seas. We're both loyal to the principle of the UN Charter, diplomacy, and stability. And crucially, the world's oldest democracy, the world's largest democracy, share the mutual political will to cooperate with each other, to establish partnerships and to explore and create new synergies. And in Prime Minister Modi,
I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. Last year, we signed a memorandum of understanding in crucial areas such as agriculture and defense. And this year we are working, and I'm sure we will finalize very quickly, a very important agreement on migration and mobility. It will constitute a very important step towards strengthening our cooperation in issues such as legal migration, fighting human trafficking, but also offering young Indians an opportunity to come and work in Greece and benefit from the growth of our economy. And the prospects for strengthening our connection, thanks to the India-Middle East Europe corridor, called the IMEC project, which was launched by India during its G20 presidency, are even brighter. Greece, you just have to look at the map to realize this, is India's gateway to Europe. And through IMEC, we see our participation as a very important aspect of this strategic partnership. But of course, as we discussed, in order to achieve this, we need peace in the Middle East, and stability is the necessary condition for every project that aims to increase the greater prosperity of the greater region to the benefit of all countries involved. And several of my meetings here in India today, together with a very large delegation of Greek business representatives, focus on promoting our economic ties, with particular emphasis on sectors such as renewable energy, infrastructure, or ports and shipping, and logistics. And of course, we want to learn from the Indian miracle of information technology, and as we discussed, bring together our very vibrant startup communities. The mutual investments are a major goal in these bilateral relations. I am pleased to say we already have important Greek investments in India in many sectors, including food, products, infrastructure, in transport and logistics, and of course, India is also beginning to invest in Greece. For example, Indian company is building together with a leading Greek construction company the new airport on my home island of Crete. But of course, we need to be more ambitious when it also comes to trade flows, doubling our trade by 2030, why not earlier? And in every area, our cooperation, I think, shows great promise, not only bilaterally, but also in multilateral arenas, including the UN. Greece will support India's candidacy to the UN Security Council for the period 2028-2029. And of course, we also support and participate in the broader dialogue about reforming the UN itself in order to make it more representative of the shifting patterns of development and global power. We know that the world today is facing unprecedented challenges that require immediate and efficient action, from the ongoing war in Ukraine to the situation in the Middle East, from climate change to food, energy security. For all these things, one thing, for all these challenges, one thing is certain. In order for governments to tackle them, international partnerships and collective action is paramount, and India has a critical role to play in this endeavor. And we view India as one of the main pillars of stability and security in the broader region of the Indo-Pacific. And given your size, history, your strategic importance, it is a very positive development that India is assuming with vigor this new leadership role. We
consider our country to constitute a pillar of stability in our own region, the Eastern Mediterranean. And it is this mutual commitment to peace that has brought us so close, and that will, I believe, foster and strengthen this strategic partnership. We've set a lot of very specific deliverables to our teams, and as we will be celebrating, as you pointed out, your Prime Minister, 75 years of diplomatic relations next year, I think this gives us the added impetus to work towards materializing this very ambitious agenda. Again, thank you so much for this welcome, and let me extend my heartfelt wishes for the continued welfare and prosperity of the very friendly